Hello everyone, my name is Rekha. Welcome back to my channel. So in this video, actually I am going to unbox all the products that I have ordered from Nykaa, जो भी recently sale गई थी उनकी, I think Pink Summer Love sale, something like that. So I have received this parcel a week ago, लेकिन the room that I have been living in, उसमें कोई window नहीं थी. There was no natural light. It was like I was living in a Kal Kotri. Now I've shifted to a new room. It has window, a small balcony, and a sun. तो चलो फट से शुरू करते हैं. So we'll be starting with this huge one. For me it's huge. For my pocket also it's huge. You must have already seen this. ये एक नया launch है L'Oreal shampoos में. Name is Hyaluron Pure and it says and it deals with the concern if you have oily scalp and dry ends. तो उसके लिए which I clearly have. मैं ये वाला serum use कर रही थी और मुझे काफी अच्छे result मिले तो I was like okay let's try the shampoo as well. So that's why I've ordered this one. And I do have high expectation from this. So from the same range I have ordered the conditioner also because वो भी मेरा खत्म हो गया था. अभी कंडीशनर से उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि somewhat सारे कंडीशनर एक जैसे ही काम करते हैं. You must have seen this one in many reviews, in many YouTube videos already. Actually मैंने उनको देख के ये लिया है. The name is Castproof Spa. It's a hair mask. And I have shifted to Bangalore actually. और यहाँ पर I'm feeling कि मेरे जो बाल है वो काफी freezy and dry से हो गए और हमेशा ऐसे poofy से रहते हैं. So that's why I thought to give it a try. And I've just got it for like this huge boxes for 500. With this hair mask, I've got this product free. I think it's a leave-in conditioner which I can like spray into my hands and they'll start feeling smooth. So this is from Bodywise. So it is a benzoyl peroxide face wash. It has 2.5% of benzoyl peroxide. I really wanted to try one benzoyl peroxide face wash because I do have acne and I keep on having them. 2.5% on a daily basis is good to go. Pata nahi, it's just Bangalore water or this product. It doesn't give you any kind of foam or anything. Okay, it doesn't have any foam. It has a little particles in it. Since I've started using this, तो उतना pimple मुझे अभी नहीं हुआ है. वरना यहाँ पर I had a huge breakup after shifting to Bangalore. So yeah, the next product is also from Bodywise. It's a roll-on product. It's an underarm roll-on from Bodywise again. So actually वहाँ पे दो variant थे. एक था कि if you have dark underarms जो तुम्हारे skin tone से 8-10 शेड डार्कर है और एक था जो सिर्फ 2-3 शेड डार्कर है. These two variants were there. This is the first time that I'm gonna be trying an underarm roll-on. देखते हैं कैसा निकलता है. Body scrub from the Bodywise. So छोटा सा sample product है. I don't use body scrubs. I like to like bath with the soap itself क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये bath face wash वाला ये छोटा से छोटा रहे routine. I don't want to spend a lot of time on it. तो इसीलिए I'm not into the body scrub yet. I might in the future पर अभी तो I am not into it. But yeah, free है तो try कर ही लेंगे. This is a Dot & Key Vitamin C moisturizer actually. So it's a super bright. The name is Super Bright Moisturizer. It has vitamin C plus E. एक बार क्या हुआ ना मैंने Blinkit से order place किया था तो उन्होंने मुझे एक free kit भेजी थी जिसमें there was a small tiny box of this and I tried it and I liked it. So I thought कि अभी sale चल ही रही है तो एक बड़ा वाला भी order कर लेते हैं क्योंकि इसको लगाने के बाद actually मैं super light but क्योंकि ये विटामिन सी है तो I would suggest कि if you have active like acne don't apply it. This product is this face powder. तो actually when I shifted to Bangalore I forgot mine at home और मुझे कुछ तो चाहिए था on a daily basis. I can't do makeup because टाइम पे रेडी होना ही एक बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए. तो मैं चाहूँगी कि मैं 5 मिनट के अंदर सब कुछ खत्म हो जाए. उनको मतलब सब कुछ शायद सोना बहुत पसंद है, मुझे भी सोना बहुत पसंद है. मैं तो 5 मिनट की भी अगर मुझे एक्स्ट्रा नींद मिलती है जस्ट बिकॉज मैं अपना एक स्किन केयर या अपना मेकअप रूटीन स्मॉल कर देती हूँ तो आई वुड टेक इट. सो दैट्स व्हाई आई ऑर्डर्ड दिस एंड आई हैव गॉट इट ओनली फॉर 175 rupees which is according to me a great deal. It's time for the next box. मैं सोच रही थी एक सस्ता सा ASMR बना देता है. So the first item from the second box is this. This is from Bioderma. It's a balm. It's a super moisturizing cream. It's for dry skin. ठीक है, मेरी dry skin नहीं है, oily skin है. I've read this कि अगर आप tretinoin या कोई भी ऐसी exfoliating cream आप use करते हो ना तो आपकी जो skin है उसको like repair होने के लिए भी आप कुछ moisturizing उसको दो. Whenever I will be applying tretinoin, उसके साथ I'll be pairing this. ठीक है, तो अच्छे से मेरी स्किन मॉइस्चराइज होगी और रिपेयर रहेगी, मेरे स्किन बैरियर अफेक्ट नहीं होंगे. बिकॉज आई ऑर्डर्ड दिस आई हैव गॉट एक्चुअली दिस फ्री. इट्स अ बॉडी वॉश अगेन.
तो भाई एक महीने का तो आराम से हो गया. आई डोंट हैव टू बाय एनीथिंग फॉर माय बॉडी वॉश. आई हैव अ फ्री बॉडी स्क्रब. नाउ आई हैव अ फ्री बॉडी वॉश as well. I've got this with this. Also, I've got a super cute small tiny gift. कितना छोटा सा ऐसी. How cute is this? This is actually a micellar water. So I forgot my micellar water as well. मुझे एक makeup remover चाहिए था because I'm in Bangalore. I might be going to club or something. Or I might be doing makeup, right? Heavy makeup. This is only of 100 ml. अभी ये वैसे बड़ा expensive है लेकिन अभी sale चल रही थी तो I think I got it for ₹200. Yeah. एंड बायोडर्मा की वैसे भी मैंने रिव्यूज पढ़े हैं, काफी अच्छे हैं कि उसके मिसेलर वाटर आर रियली गुड. इवन इफ यू आर नॉट अप्लाइंग मेकअप यू कैन स्टिल यूज इट इन अ डबल क्लेंजिंग मेथड जस्ट टू रिमूव योर सनस्क्रीन और एनीथिंग. So yeah, so this was the last product from our Nykaa haul. I hope you liked it. I will be using all these products and hopefully I will be making a review video as well. And if you want to suggest me for my hair, actually, because I'm having very dry hair here and I'm having this like breakout in this area of my face. तो अगर आपको कोई भी सजेशन देना है कि that I must like use while taking care of my skin and hair, you can obviously drop it in my comment section. So अगर कोई भी फीडबैक है कि ऐसे रिव्यू बनाना चाहिए था, ऐसे अनबॉक्सिंग करनी चाहिए थी, कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, कुछ भी आपको रिव्यू देना है, you can just give it and I will be taking that positively. I will try to improve my next video. Till then, bye. Oh yeah, like, share and subscribe. Bye.